मैं हैदराबाद में एक इवेंट करने वाला हूँ 28 अक्टूबर शनिवार को 4:30 से 5 बजे तक। जो उधर मुझे मिलना चाहे वो नीचे दिए हुए जीमेल आईडी में और व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। hyderabadmoneypage@gmail.com उसका ईमेल एड्रेस है। मैं आपको हैदराबाद में मिलाऊंगा। डेल्टा कॉर्प का बुरा समय अभी तक खत्म नहीं हुआ है और ये सब जीएसटी है गैम्बलिंग सर्विसेज के लिए, क्योंकि जीएसटी का रेट बढ़कर 28% किया गया है तो बिजनेस ही अफेक्ट हो जाएगी। तो ये बहुत रिस्की स्टॉक है, इवेंट बेस्ड स्टॉक है, इसमें हमको निवेश नहीं करना चाहिए, कंसिडर नहीं करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ द बैटल, इट्स ओनली इन द बॉम्बे हाई कोर्ट, इट विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड देन गो टू द 5 bench of the Supreme Court. The total demand from GST is higher than the market cap of Delta Corp at that time. So GST is not going to go away and there is going to be a lot of arbitration and cases. The Delta Corp will have to pay a substantial money to take a stay order. But even if the stay order is given, there is going to be a overhang against this company, and this is not a company which no judge will love because it's a gambling company. Correct. And the dispute is whether 28% tax can be levied, and if so levied, when can it be levied? Most likely courts will give final judgments in favor of government. So it is an event based thing, and the black swan event is the GST rate, and the governments are always right. There is no point fighting the sovereign, so better to stay away from the stock. Correct. This I spoke in Be Rich, which I think unfortunately you couldn't join me when I spoke about this, which I think you can elaborate in greater depth and give your nuances of this headline. Small investors bear the brunt of the crash, may bear the brunt of the crash. What they're saying is in the last 2 months, 21,900 crores worth of investment has been made by small term investors, and there's people are entering the market in the fear of missing out, like what was happening in our tulip bubble. Even Newton did it. Yes, the fear of FOMO is happening, and this FOMO is creating more and more retail investors running in, flocking in. There's a business standard article also which I spoke about, where they're saying the income tax capital gains return year on year, if you see tracking, suddenly there's a spike from 1 million, it's gone to 3 million people filing, and there are 55 million people who are actually actively trading. Majority of the people aren't even filing their returns. they're not making money. Yes. So, and SEBI has said 90% of traders in India are losing money. So so they're saying small investors may bear the brunt of this crash. No, the will is the answer. May is an uncertain word. Will is definitely certain. From the time of COVID, it is small investors who have opened demat accounts and rushed into it. Yeah, they're saying this is even bigger than the COVID pandemic bump. Yes, and most of them have invested in small cap stocks. Companies like Brighton Corp, which we were talking about in Money Page once. Yes. So these are Dutch stocks. Yes. And most of them have no idea of what they are doing. These stocks have already lost money. Most of them are sitting in losses. They may not sell. Whenever I see a portfolio, I can see a portfolio from 2008. It will have Nagarjuna Construction. It will have several set of stocks, Kingfisher Airlines and Suzlon. Even now Suzlon is there. Then it will have Praj Industries. So there are a set of stocks, Karturi Global from 2008. If you can see a set of Dutch stocks, you know this has come from this era. So you know the Harshad era, you know the 2000 era, you know the 2008, 2016, and then there will be a list for this also. And this is not the first time. Always when FIIs go out, wise money is going out. And remember what Warren said, fools do what wise men did first. Correct. Okay, so definitely they are being taken for a ride, and the worst is yet to come. And this is not true only in India, this is true in America also. A lot of people are going to lose money. 90% of the people who are investing in stocks lose money. And also what happens is 99% of people who trade in F&O also lose money. In fact, SEBI has now said whenever you try to do a future options trade, it will pop up and you have to say, okay, I know, I understand, and then gamble. Yes. So this is like weapons of mass destruction. It's like giving nuclear toys to kids and ask them to play with it. And the exchange gets to keep the money. Yeah, it's like pretty much as I say in the video, it's like knowing that when you hear today, if you go out to the road, 9 out of 10 people will die today on the road if you go out. Everyone's still ready to get on the motorcycle and go. Yes, exactly. So this is, you think you can make the money. And you hear the press plays up stories of people who have
made money. So you think the next door guy has made a lot of money and I have missed out. And therefore they try to get into it and they lose money. Correct. ये पूछा गया कि मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल आया था कि लोगों के जो छोटे इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर, उनका ही नुकसान हो रहा है। हाँ, जरूर नुकसान हो रहा है। मैंने बताया 2000, 2008, 2016 की जो क्रैशेस हुए हैं, मैं उन सब की ट्रेडमार्क स्टॉक्स को जानता हूँ। जब वो पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स आता है, मुझे पता है कि इस निवेशक ने इस समय में पैसा गवाया है। तो एक बार अपना हाथ जल गया तो वापस नहीं आएगा। तो इस बार भी क्या होगा कि लॉट ऑफ जो रिटेल निवेशक हैं उन्होंने अंदर आए हैं, ब्राइटकॉम जैसा कंपनी में इन्वेस्ट की है, उनका हैंड्स जलेगा। हमको 2-3 साल में पता लग जाएगा कि नुकसान किसका है। सेबी ने ठीक बोला है, स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट करते हैं 100 में से 90% की लोग, 100 में 90 लोग की नुकसान होती है। F&O में 100 से 100 में 99 लोग की नुकसान होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं आप स्टॉक्स मत खरीदिए जब तक आपको नॉलेज है किसको खरीदना है, क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और किस कंपनी को खरीदना है। दूसरा बात, एक्टिव फंड्स में मत डालिए। एक्टिव फंड्स में भी नुकसान आएगा क्योंकि इस एलिवेटेड वैल्यू में जब FIIs बाहर जा रहे हैं, सिर्फ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, तो वो भी आपका नुकसान होगा। तो इसीलिए अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन मार्केट के बारे में आप जानते नहीं हो, तो आप सिर्फ निफ्टी और इंडेक्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। Adani total has fallen 85% this year, reaching Hindenburg's target price. Okay, Adani price is down 85%. Yes. When Heidenberg came with about the report, he said the value of Adani stocks will fall by 85%. Most of these stocks have corrected. Wilmer also has corrected big. Yes. But the first stock to lose 85 rupees out of 100, if the value of Adani total gas was 100, Yes. it has now come down to 15. Definitely Adani is a over-leveraged company and there is going to be a price correction. One more news is there that Adani Enterprises is trading below its 200-day average, which means that is also correcting. Adani Enterprises is the main flagship company stock Yes, of the holding, yes. Adani Group. पूछा गया कि अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक के बारे में और बोला गया कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, अदानी टोटल गैस का दाम तो 75% गिर चुका है। हाँ, ये सच है कि अदानी की स्टॉक्स वो ओवर वैल्यूड है। सो अगर टोटल गैस का दाम जब रिपोर्ट आया 100 रुपया था, आज वो 15 रुपया हो गया, 85% का नुकसान हो ही गया है। अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक 200-डे मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है। 200-डे एवरेज एक साइन है, टेक्निकल साइन। जब इसके पीछे नीचे मार्केट एक स्टॉक प्राइस गिर जाती है, उसको हम बेयर मार्केट कहते हैं। अभी ये डेफिनेटली अदानी ग्रुप की बुरे दिन चल रहे हैं। Too much risk in the world. Bill Ackman covers bearish bets against treasuries. So Bill Ackman is one of the guys along with Gross who was short on treasuries. And when the 10-year yield crossed 5, he covered his bets and he said that the US economy is far weaker than what the headlines are saying. So the rates may not go further. This is the lowest point. But he did not say the crisis is over. He says the rates will remain at this price for some time to come. So after covering his treasury bet when he was asked, he says that the world is still very risky. And the Iran-Palestine and Israel war is a very big risk. Bill Ackman ने बोला है कि रिस्क अभी भी हैं। उन्होंने ट्रेजरी में शॉर्ट किया था, 50% मुनाफा में उन्होंने इसको कवर किया है और बोला है कि रेट्स ऊपर नहीं जाएंगे लेकिन इतना ज़्यादा एलिवेटेड रहेंगे और नीचे जल्दी नहीं आने का कोई आशंका नहीं है। यही बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पैसा बोलता है। आप इस पॉडकास्ट को सुने, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको इस वीडियो को पसंद है, आपको इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि जब हम हर बार वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हो सके तो आप मदद कीजिए, इस वीडियो को दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।